Hello everyone, welcome back to Gate Academy, and here I am with part number 2 of the group discussion video. So now in this video we will first discuss a certain GD etiquettes. Second, I'll be discussing certain frequently asked questions which is going to uncover the doubts that you have regarding the process and the myths that you have. It will definitely get cleared. So let us start with the etiquettes first. So the number one rule that is to be followed during a GD is that you have to initiate the GD only if you've understood the topic. If you've not understood the topic, please don't initiate the GD. Number two is that you need to maintain proper eye contact. अब eye contact किसके साथ में? With every member in the discussion. ठीक है? सबके साथ में आपको eye contact करना है except the moderator. So you do not have to look at the moderator once they've given you the topic, or a single person is there. If he or she has given you the topic, you have to say thank you, and then you don't have to look at them till the time ends. All right. उसके बाद होता है आपका कि आई कॉन्टैक्ट के टाइम पे अब हम कैसे रूल फॉलो करें. देयर इज एन 80-20 प्रिंसिपल विच सेज दैट 80% आप फोकस करें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में, 20% यू शुड बी फोकसिंग ऑन द लेस एक्टिव और द इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, सो दैट कोई भी लेफ्ट आउट ना रहे, सबको आप देखकर बात करें. ऑलराइट. नाउ एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न्ड, यू डू नॉट हैव टू मोनोपोलाइज द डिस्कशन. एक ही डायरेक्शन में आपको बात नहीं करनी है. यू नीड टू ब्रिंग इन डाइवर्स डायमेंशंस इनटू द टॉपिक. अब ये कब आएगा? कब आप बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात कर पाएंगे? कोई भी टॉपिक अगर दिया जाएगा, ओनली इफ यू आर अपडेटेड, एज इन आप रेगुलर में न्यूज़ पढ़ रहे हैं और आपको पता है चीज़ों के बारे में, तभी आप कर पाओगे. सो अगेन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, ये हो गया. The next important thing is that you need to listen when people are talking. ये पहले भी मैंने बोला था कि सुनना बहुत ज़्यादा important है, सामने वाला अगर बात कर रहा है तो. Then next is you should carry a pen and a paper with you, wherein जब आपको GD allot करते हैं टॉपिक जब मॉडरेटर, तो आपको कुछ 30 seconds to 1 minute का टाइम देते हैं, wherein you're supposed to think about the topic. So during that time अगर पेन और पेपर रहेगा आपके पास में, so you'll be able to note down certain points. And now it was like it has happened earlier with some of my students, wherein they went for a GD in an institute. There was a rule that they were not allowed to carry a pen and a paper, which the students were not aware of. ठीक है? So the ones who carried pen and paper with them were rejected. So now there is no thumb rule, as in normally वो allow करते हैं. जितनी भी चीज़ें मैं बात कर रही हूँ इन वीडियोज़ में, देर इज़ नो रिटन रूल टू इट. इट्स जस्ट दैट आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ मीन मॉक डिस्कशंस ये सारी चीज़ें आई हैं. सो येस, आप अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे, पता कर लेंगे. सपोज यू आर सिटिंग इन अ पूल कैंपस ड्राइव हो रही है आपके इंस्टीट्यूट में हो रही है, तो जो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आप पूछ लेंगे कि यार अलाउड है कि नहीं, आप पता करके बता दो. दैट्स द बेस्ट वे टू डू. इफ दे अलाउ यू कैरी, इफ दे डोंट यू डोंट कैरी. बट generally if there is nothing is mentioned, it is advisable to carry a pen and a paper with you. All right. Now you do not have to get emotional during the discussion, even if the topic is close to your heart. आपको emotional बिल्कुल भी नहीं होने की ज़रूरत है. ये again it's a rule or an etiquette that is to be followed. All right. So next is that you do not have to make any personal remarks on any of the candidates during the discussion. ये disrespect होता है, तो personal remarks आपको किसी के लिए भी नहीं करना है थ्रू आउट द डिस्कशन. ये बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट यू नीड टू क्रिएट योर ओन चांसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि तुम बोलो. आपको अपने चांसेस क्रिएट करने हैं. अब ये चांसेस क्रिएट कैसे होंगे? सपोज यू नो द टॉपिक वेल, तो आपके लिए ईजी होगा. इफ आपको टॉपिक नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप थोड़ी देर वेट करेंगे, जब दूसरे बात करेंगे तब फिर हम क्या करेंगे, What are we going to do? जब वो बात करेंगे तो टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और जो सामने वाला बोल रहा है उसी को हम डिफरेंट लैंग्वेज में पैराफ्रेज करके क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. सो ये है, और कोई भी आपको बोलेगा नहीं. सो अब हमको एंटर कैसे करना है जीडी में? देयर आर स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स इन द ग्रुप. सो जब डिस्कशन में वो जो स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स हैं वो लोग पॉजेज ले रहे हैं बात करते करते, या फिर कोई फिलर्स यूज कर रहे हैं करके, तो वो टाइम होता है बेस्ट आपको एंटर करने का जीडी में. तो दिस यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ. ऑल right. So next important thing that I want you to know is how to express your opinions during the GD. So now जब हमें opinion express करना है तो उसमें 3 things can happen. Either you want to agree with some point
or you want to disagree, or you want to interrupt into the GD and add a new point. So agree वाला जो point होता है ना, वो कब काम आता है आपको? जब आपका point किसी ने already cover कर लिया, and it is going to happen for sure during GDs. आप ये experience करेंगे, mock GDs में ज़रूर participate करेगा. So if somebody has already taken up the point that you wanted to take up, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे आप simply बोल सकते हैं, yes, I also think so, or that's a good point, yes, I agree with the point that you are making, or else आप बोल सकते हैं, I couldn't have agreed more. As a matter of fact, Mr. X is right, and in fact I was coming to the same point, and then say your point or paraphrase it. और अगर आपको जस्ट बताना है कि आप अच्छे से उनको सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसे वन वर्ड बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली, अग्रीड या फिर डेफिनेटली. ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं व्हेन यू वांट टू अग्री और व्हेन समबडी एल्स हैज टेकन योर पॉइंट, बोल दिया अगर किसी ने. Now, as far as disagreement is concerned, we do not have to use the word disagree during the discussion because हमें positive sound करना है. सबका एक अपना opinion होता है जिसको हमें respect करके चलना है. Alright, this is not a debate. I will repeat, debate में for होते हैं हम एक topic के, against होते हैं हम एक topic के. But as far as GD is concerned, positives, negatives दोनों aspects हमें discuss करने हैं, and everybody has an opinion which they are allowed to share. ठीक. So, अब अगर मुझे disagree करना है अपने fellow participants से, तो मैं कैसे करूँगा? So here are the phrases that you can use. You can simply say yes, but then keep your point. Or you can say, I do not really agree with the idea because, then state your reason why don't you agree with that particular point. Or you can say, I see things rather differently. मेरा जो point of view वो थोड़ा सा different है, मैं दूसरी तरीके से सोच रहा हूँ चीज़ों को. Then that's a good point. But again, जो आपको बोलना है उसके बारे में, then I am afraid to have a little different opinion on this. This is one way of looking at the things. However, this is the different way जो भी आपको बोलना है. And then as far as I am concerned, I find this point a little less relevant maybe. ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, when you want to disagree with somebody. और भी कुछ creative अगर आप खुद से obviously ला सकते हैं तो आप बोल सकते हैं, but remember you're not supposed to use the word disagree. It's a big no. All right, now if you want to interrupt in a GD, इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं. Either you want to interrupt, और अगर कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है तो आप उसको बोलना चाहते हो कि मुझे मेरी बात पहले फिनिश करने दो, तो उसमें भी मुझे रूड होकर नहीं बोलता है लेट मी फिनिश. नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. तो कैसे पोलाइटली हम इसको बोलेंगे? लेट्स सी दैट. सो व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट इन अ जीडी, So I am sorry to interrupt, but I would like to make a point here. ये बोल सकते हैं हम. Would you mind if I come in for a moment? ये भी बोल सकते हैं हम. Or may I quickly add in something here and then put up your point? Before we go ahead, I would just like to quickly add that put your point. तो ये सारी तरीके होते हैं. If you want to interrupt in the GD, आप इन तरीकों से क्या कर सकते हैं? Interrupt कर सकते हैं. All right. Now, if somebody is interrupting you और आप चाहते हो कि आप अपना point पहले रख लो, so what are you supposed to say then? So you can say, would you please let me finish? Can I please continue for a moment? Or let me wrap up my thought before you start. So these are some smart ways wherein अगर कोई आपको interrupt कर रहा है and you want to finish your point, तो आप ऐसे प्यार से एक smile के साथ में बोल सकते हैं. All right. So yeah, that's it about expressing your opinion. So these are the etiquettes that you need to follow. All right. Now let us start with some frequently asked questions, which in my I've already said more than a decade I have been into this thing. So बड़े सारे students के बड़े सारे doubts होते हैं. So I have made a list of questions which I will be discussing now with you guys. All right. So if in case इसके अलावा you guys also have certain doubts, so you can definitely put it in the comment box and I will surely address your doubts. So yeah, let's start. So before I start, I want to tell you guys again, I'll repeat कि भैया कोई ground rule नहीं है इन चीज़ों का. Discussions हो रखे हैं online platforms पे, available हैं articles बहुत सारे experts ने बहुत सारी बातें करी हैं. So whatever good things are there, I'm sharing here with you, which is definitely going to leave a positive impact and which will definitely help you clear your group discussion. All right. So question number 1 is, how should I address the other group members? Very, very important. So when you go for a GD, if you know or if you can remember the names of every participant in the group, nothing like that.
ठीक है, बिल्कुल मतलब जब हम किसी को नाम से एनीवेज एक पार्ट होता है आपकी पर्सनालिटी का कि अगर आप किसी को उनके नाम से एड्रेस करते हैं दैट लीव्स वेरी आई मीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो अगर सबके नाम अगर याद हो सकते हैं आपको तो डेफिनेटली आपको उनके नाम से बुलाना है। इफ नॉट आधों के याद है आधों के नहीं याद है, सो मोस्टली व्हेन you'll be in GDs you'll be given certain batch numbers, so you may address the students with their batch numbers, or if the batch number is also not there and then you don't know the names also, so आप अपने hand gesture से, don't have to point fingers, ऐसे हैंड जेस्चर से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं एट दिस he rightly said or she rightly said. All right, so this was question number 1. Now question number 2 is that suppose I have a lot to say on the topic, should I say all of it? So I would suggest no, एक बार में हमको नहीं बोलना है। So experts कहते हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन सपोज 12 मिनट का है और आप उसमें एंटर करने की जब बात होती है तो अगर आप 2 से 3 बार उसमें एंटर करें जीडी में 30 सेकेंड्स के लिए भी अगर आप बोलते हैं, 30 सेकेंड्स 45 मिनट्स के लिए भी अगर बोलते हैं और अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, दैट्स आई मीन अ गुड थिंग, है ना। एट अ स्ट्रेच पूरी चीज़ें एक साथ रट्टू तोता जैसे हमें वहाँ पर नहीं बोल देनी है कि रट के आए और बस उसको हमें बोलना है। All right, so this was question number 2. Now question number 3, are the group members supposed to keep track of the time or will the panel keep track? So generally there will be a buzzer with the moderator wherein वो आपको शुरू में ही instructions दे देंगे कि लास्ट का जब 1 मिनट बचेगा we will ring the buzzer and then you will have to conclude the GD within that 1 minute. So yes, वो generally track रखते हैं। If it is not so, तो आपको बार बार घड़ी नहीं देखनी है। 8 से 10 मिनट अगर बोले हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली बिहेव करना और सोचना है कि अब हो गया है, तो देन यू शुड बी कंक्लूडिंग द जीडी। नेक्स्ट इज योर, इज देयर एनी पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट विच इज फेवरेबल टू द पार्टिसिपेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है? सो जनरली व्हेन देयर इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट, जब सर्कुलर अरेंजमेंट है जीडी में, सो ऑब्वियसली सब कुछ एक जैसा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। देयर आर नो एंड पोजिशन, देयर इज नो सेंटर, गोल आप बैठे हुए हैं, टेबल है आपके बीच में। देन इज योर, इफ यू हैव दिस सेमी सर्कल अरेंजमेंट जो कि जनरली रहता है, सो सेमी सर्कल अरेंजमेंट में आई वुड से कॉर्नर जो पोजिशंस होती है, दोज पोजिशंस आर द मोस्ट फेवरेबल वंस। सो इफ यू आर गिवन अ चांस to choose a place for yourself, try occupying it from the corner positions and then moving towards the center. Why do I say so? Because मैंने बोला starting में, बीच में, कि you need to maintain eye contact with everybody in the discussion, है ना। So जब आप center में बैठोगे, so you will have to look to your left, to your right, to your left, to your right. So वो थोड़ा सा क्या होता है, सामने moderator भी होते हैं तो कभी हमारी नज़र उन पर भी पड़ जाती है ना। So वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली वही आपको सीट मिल रही तो भी इट इज ओके, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एज फार एज द कॉर्नर पोजीशंस आर कंसर्न, वहां पे रह के आपको सिर्फ आई मूवमेंट ज्यादा करना है, डोंट हैव टू मूव योर हेड वेरी मच, इजंट इट? सो इसलिए अगर आपको इफ गिवन अ चांस आप कॉर्नर पोजीशंस ऑक्यूपाई करें एंड देन मूव टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इफ बाय एनी चांस आप सेंटर पे बैठ रहे हो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, की एक ही तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन आजू बाजू वाले जब बात करते हैं तब यहाँ पर देखना अगेन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ऑलराइट, coming to the next question is, if we do not understand the meaning of the topic, should we ask the moderator to explain? So पहले तो यार जब आपको अलॉट होगा टॉपिक, जब आपको अलॉट होगा तो लोगों की शक्ल से ही आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी, कुछ लोगों को तो पता है क्या टॉपिक के बारे में, अगर आपको लग रहा है कि वो लोग पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, सो देन यू हैव टू एक्ट वेरी स्मार्टली। आप बिल्कुल ऐसा करेंगे कि आपको आता है टॉपिक, आप भी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, और एंड यू आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट द जीडी। जब सब बात करने लगेंगे देन यू विल हैव टू मेक अ नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पैराफ्रेज करके बोलेंगे। क्लियर विद दिस वन? अब अगर भाई 10 के 10 लोगों को टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स यस यू विल हैव टू से सॉरी टू द मॉडरेटर, ईदर यू कैन रिक्वेस्ट देम टू चेंज द टॉपिक और यू कैन टेल देम टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, इफ वैसे ऐसी सिचुएशन आइडियली एग्जिस्ट।
आई डोंट नो, कर भी सकती है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, बट इफ इन केस हुआ है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी बोलने से बेटर है आस्क फॉर सम क्लैरिटी. ऑलराइट, next question is, can I use technical terms or jargons which is clear to me but not to the group? Of course not, as I've already said. Now again, a very important thing, is it beneficial to be the first speaker in the group? बेटा बहुत ही important है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना. फर्स्ट स्पीकर होना डेफिनेटली बेनिफिशियल है, बट कब? अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है एंड आपने टॉपिक को स्टार्ट जब किया तो वो ब्यूटिफुली किया, टू द पॉइंट किया, क्योंकि वो टाइम होता है वेयर इन यूल ग्रैब एवरीबडीज अटेंशन एंड इमेजिन योरसेल्फ टॉकिंग स्टूपिड थिंग्स ऑन द टॉपिक. जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया तो स्टार्ट करेगा तो तुमको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, तुमने स्टार्ट कर दिया बोलना. So that is going to leave a negative impact on you for sure, क्योंकि वो पूरा आगे का जो डिस्कशन रहेगा ना उसकी टोन खराब कर देगा. ऑल राइट, सो स्टार्ट सिर्फ तभी करोगे जब तुम्हें टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है, तभी वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज आपके लिए नुकसान है. क्लियर विद दिस? मार्क माई वर्ड्स कि स्टार्ट ओनली व्हेन यू नो द टॉपिक वेल. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how critical is my fluency in English to my performance? I've already said fluency important hai. ठीक. Then should the participant allocate time for each person before the start of the session? ऐसा कुछ भी नहीं करना. As I said, you need to create your own chances of involvement. Should we be aggressive? Of course not. What should I do when somebody else presents my idea before I can? I've already said while agreeing वाला point जब मैं बता रही थी तो आपको क्या करना है. Now how should a group select a topic if they are asked to? अगर moderator ने बोल दिया you guys select a topic amongst yourselves, तो वहाँ पे भी do not have to create chaos, है ना, कि अपनी बात पे अड़ गए, नहीं यही वाला है. So maturely आपको क्या करना है, पूरे ग्रुप से बहुत प्यार से धीरे से बात करनी है कि let us first decide the area. हमें पॉलिटिक्स में जाना है, हमें स्पोर्ट्स में जाना है, हमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करनी है, हमें बॉलीवुड के बारे में बात करनी है, एनीथिंग, जो भी जॉनर पहले आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे. रिमेंबर again to be very polite. All right. Then is, which one is the priority, the content or the presentation? Remember both. Subject knowledge भी important है and control on your body language and other जो भी हमने etiquettes discuss किए हैं important है. Now how long a GD session last? About 10 to 12 minutes maybe. Should the initiator introduce himself or herself? Yes, of course. जो बंदा initiate करेगा GD वो अपना नाम बताएगा. As in, my name is Shipra Chawla. The topic which is given for discussion is so and so, and then you have to move forward. So that's it. These were some frequently asked questions. So far we have discussed the group discussion etiquettes. We have discussed first. Then we looked into some frequently asked questions, and obviously in between हमने देखा था how to express our opinions. And now if you guys have any doubts, anything to ask, please leave your doubts in the comment section, and definitely I will come up with clear your doubts in the next video. So yeah, bye bye, take care, I'll see you guys super soon, and yes, all the very best, and do prepare well, do remember the etiquettes, and do watch the previous video if you've not. Bye, take care.